सबसे पहले मैं डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन जी को बुलाना चाहूंगा। आप बताएंगे कि परोपकार से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या संबंध है, कैसे परोपकार से हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अरिहंत कुमार जी जैन सोमैया इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अनुभव से हम लोग लाभान्वित होंगे। श्री अरिहंत कुमार जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसे थैंक्स फॉर गाइडिंग मी। Thank you, sir. इंद सदवंदियाणम तिहुवण हिद मधुर विसद वक्काणम अंतातीत गुणाणम रणमोजिणाणम जिद भवाणम। Respected Shraddheya Munishri ji, Mathyedu Nami, respected Sancheti sir, Director of Dharma Studies, Supriya ma'am, SP Jain sir, Naren Bhandari sir, and all the eminent scholars presented here. Thanks for giving me this opportunity. Is it visible, my slide? Yeah, please go ahead. So my topic is Paropkar in the solution of economic inequality. Around the world today, the greatest threat to justice is inequality. And inequality is the byproduct of systems and structures that have over many decades tilted the scale in favor of some while limiting opportunity for many others. So first of all, let us understand in simple terms what is economic inequality. So economic inequality is the unequal distribution of assets, wealth or income and opportunity between different groups in society. Well, the problem of economic inequality has assumed as a monstrous proportion today global level and is considered a stumbling block in the path of integrated social development. It is also said that it is also described as the gap between rich and poor, as Munishri said, and it is also called wealth gap. And this disturb our social harmony and class conflicts. Among the causes of inequality, economic inequality, the will for possession, occupation, or holding is the prime. So, as Munishri said, accumulation of wealth on the one side and the lust of worldly enjoyment on the other are jointly responsible for the emergence of present-day materialistic consumer culture. And this is definitely a very relevant and serious topic. And I think instead of relying on the government to solve this problem, it is very important to consider how we can solve it by understanding and fulfilling our social responsibilities. Once Nobel Award winner Amartya Sen, renowned economist, Amartya Sen said, economic growth without investment in human development is unsustainable and unethical. Because the principle of economics is the upliftment of human society, not its downfall. And all roads to economics go through ethics. So we can reduce this problem a bit by our ethical and humanitarian behavior. And the first thing that becomes our moral duty here is philanthropy. So, next slide. Okay. So, in childhood, we must have read this shloka, Paropakaraya phalanti vrikshaha, Paropakaraya vahanti nadyah, Paropakaraya dhuhanti kava, Paropakarartham idam sharidam. इसका मतलब है कि परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं और गाय है वो परोपकार के लिए दूध देती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये शरीर जो है हमारा ये भी परोपकार के लिए, दिस बॉडी इज ऑल्सो फॉर philanthropy. And philanthropy is important because it provides opportunity, and it has also called the Mahadharma. And philanthropy can be broadly defined as love for humankind. It is derived from the Greek word philos, which means loving, and anthropos, which means humankind. Such a favor in which there is no selfishness is called philanthropy. The concept of philanthropy is very ancient in Jain philosophy,
and Jain agamas, everywhere we find the thought of mutual cooperation. And they maintain that it is not a struggle, but the cooperation that is in the law of life. ये संघर्ष नहीं, सहयोग है. तो हम सबने पढ़ा है, जैसे अभी मुनिश्री ने भी बोला कि तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र में इस सूत्र आया है, परोस परोग्रहो जीवा नाम. यहाँ पर हम देखते हैं कि तत्वार्थ सूत्र, इन तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी क्लियरली मेंशन दैट true and all the living beings are associated with each other. This is refreshingly contemporary in its premise and perspective, and it is means that all aspects of nature belonging together are bound in a physical as well as metaphysical relationship. This is called actually the Parasparagruha Jivana. And Jain tradition proclaims that cooperation and coexistence is in Anekantavad, are the essential nature of living being. And life is viewed as a gift of togetherness, accommodation, and assistance in a universe teeming with interdependent constituents. And the hidden meaning of this Parasparagruha Jivana, the other side of this sutra, also means doing a favor to oneself. Philanthropy reflects the feeling of harmony. But the reality is that we are doing ourselves a favor through the accumulation of virtue. हम पुण्य कमा रहे हैं. ऐसे सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि स्वरोपकार अनुग्रह स्वरूप सोपकार पुण्य संचय परोपकार सम्यक ज्ञान वृद्धि. यानी स्वयं अपना अथवा दूसरे का उपकार करना, ये अनुग्रह कहलाता है. दान देने से पुण्य का संचय होता है और उससे हम ही फल भोगते हैं. तो ये हमारे लिए उपकार है. और जिन्हें दान दिया जाता है उनको सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती है. तो ये उपकार यानी पर का उपकार कहलाता है. एक तरीके से देखा जाए तो परोपकार में स्व और पर दोनों का ही उपकार जो होता है वो सम्मिलित होता है. The principle of Jain philosophy develops the spirit of philanthropy in a person. जहां हम देखते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, शील, परिग्रह 5 प्रकार के पाप हैं, ये अपकार कहलाते हैं. वही जो हमारे पंचाणु व्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये वही उपकार कहलाते हैं. So it is not very necessary that the person doing the favor should be a rich or high position person. In every phase of life, someone progress and development, some person from any class, any time, anywhere can become our guide. And that's why the meaning of philanthropy should not be understood only to donate or provide financial assistance to someone. Philanthropy means that a person should be had in such a way that he can become self independent. मतलब उसको आत्मनिर्भर बनाना है कि उसको दोबारा डिपेंडेंसी की जरूरत ही ना पड़े. मुझे एक इसमें संस्मरण याद आता है, मैंने पढ़ा था किसी बड़े व्यक्ति का कि उसने बताया कि वो गरीब था और बहुत पढ़ने में होशियार था, लेकिन धन के अभाव में उसकी पढ़ाई में बाधा आ रही थी. तो किसी सज्जन व्यक्ति ने उनको उसकी लगन को देखते हुए, उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए उसकी फीस आदि की व्यवस्था कर दी. उस वक्त 200-250 रुपए की व्यवस्था कर दी और हो गया. और बड़ा होके वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बना, बहुत बड़ा उसकी कंपनी उसके करोड़ों का मालिक बन गया. और उसने कहा कि वो जो 200 रुपए की कीमत थी, आज वो 2 लाख रुपए की जो कीमत है ना, वो 200 रुपए से कम ही है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस जगह उसके काम आ गए. तो जब वो सज्जन व्यक्ति को वो 2 लाख रुपए लौटाने गया 200 के एवज में, तो उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे आप उन्हीं पे खर्च करो जिसकी जरूरत है, और वो भी आपकी तरह अपना भविष्य बना सके. So this kind of idea, this kind of initiative can build the noble system in society and can help to reduce the economic inequality. So there are some small steps to reduce economic inequality through philanthropy, to give scholarships, fellowships in the education sector, जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई जो हमने अभी संस्मरण सुनाया वो यहाँ पे काम आएगा. टू प्रोवाइड फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनको फंड प्रोवाइड करना. हेल्पिंग टू डेवलप बिजनेस फॉर द मिडिल क्लास, एम्प्लॉइंग द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज. ये बहुत जरूरी है कि जिसकी जैसी एबिलिटी है, आज की एडिट में ऐसा रहा जिसकी जैसी एबिलिटी है वो ना करके कुछ और उससे कराया जा रहा है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो एक विकास रुक जा रहा है. पेइंग योर एम्प्लॉयज अ डिजर्विंग सैलरी फॉर देयर हार्ड वर्क and many more.
So these are the some of the thing. And one more thing I want to say, that Gandhi's concept of trusteeship. Trusteeship is a socio-economic concept put forward by Mahatma Gandhi. Trusteeship means a way by which the wealthy people would be the trustee of trust that looked after the welfare of the people in general. In modern times, concept of corporate social responsibilities is close to the idea of trusteeship. Gandhi's idea of trusteeship could be considered in a holistic way. He said, economic equality of my conception does not mean that everyone will literally have the same amount. It simply means that everybody should have enough for his or her needs. The real meaning of economic equality is to each according to his need. So this Gandhi's principle of trusteeship too held a cultural dimensions. He wanted to build a new cultural inheritance of man, not merely on the basis of economic equality, but psychological equality. The culture reconstruction that he wanted to bring about was based largely on three principles. One is first is equality, non-violence, and morality. And these enduring principles laid the foundation for trusteeship. हम यहाँ देखते हैं कि हम कंपनीज में अगर एम्प्लॉयज को वो एक शेयरिंग पार्टनर की तरह अगर हम उनको करें तो वो कभी भी थकेगा नहीं, वो उसको अपनी कंपनी समझकर वो दिन रात काम करेगा, वो समय नहीं देखेगा, तो उसको शेयरिंग पार्टनर बनाते हैं। ट्रस्टीशिप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे गांधी जी ने बताया। एंड अनदर कॉन्सेप्ट बाय आचार्य महाप्रज्ञ, जैसे कि अभी सर ने भी बताया, नौलखा सर ने, कि आचार्य महाप्रज्ञ हैड लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड विसर्जन, एन इनिशिएटिव बाय आचार्य महाप्रज्ञ टू परफॉर्म अपरिग्रह व्रत। अपरिग्रह व्रत। सो the most important principle of economic management would be that the basic need of society should be fulfilled, and every individual in a society should be able to get the basic facilities like roti, kapda, or makan, and the medicine, education. So Acharya Mahapragya had launched a new initiative called Visarjan, and it calls upon people to renounce a part of their earnings every day as a primary step towards the goal of non-possessiveness called aparigrahavad. And to earn money is not bad thing, but it is the love of money, or what we call a feeling of attachment. It is bad. So this tendency in human beings have been instrumental in widening the gap between the rich and poor. So Achar Mahapragya's initiative of Visarjan and work wonderful if the spiritual leaders belonging to other religions tradition join hands to transformation of individuals, and it may herald a new age, new era. So by these small steps, we can reduce the economic inequality by philanthropy, paropkar. And these are my thoughts about this topic. Thank you so much, Jai Jinendra. धन्यवाद अरिहंत जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने अपने विचार व्यक्त किए और हमें नए पॉइंट्स बताए कि हम किस दिशा में सोचें और कैसे आगे बढ़े। मुझे यहाँ एक बचपन का याद आता है जिसमें कहा गया था कि परोपकार बंद मुट्ठी में करें। अगले व्यक्ति को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप उसका रियल मतलब आनंद लेना चाहते हैं तो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जो आप उसको देखे लगे कि आप उसके सामने झुके हुए हैं। तो ये परोपकार की जो भाषा है और आपने जो समझाया, बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया। ये लास्ट मेरी स्लाइड थी, बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी थ्रू फिलैंथ्रोपी, हेल्पिंग, लिसनिंग। ये था, तो मैंने जल्दी करने के चक्कर में ये मैंने छोड़ दिया था, तो ये आप प्लीज बिल्कुल। ठीक है। और इतने लर्नेड स्पीकर्स, तो मुझे निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है